Hello everyone. So right now we are in the parts of Lahore which we see every day. Probably the limbo that we live in, the clean, somewhat clean Lahore, which has wide roads and a relatively cleaner airspace. आपका DHA वाला Lahore. And now we're going to the part of Lahore which bears all of the burnt of everything that this part of Lahore does and this part of Lahore consumes. The commodity culture has rendered half Lahore unusable and insufferable to a lot of people. तो हम जा रहे हैं अब चुंगी अमर सेतु, जिसके ऊपर लास्ट ईयर आई वर्कड ऑन पर्टिकुलर NGO program for clean water supplying and for health efforts with Hakuke Health movement. And during that 1 year, we discovered that 90% of the households in Chungi Amar Setu don't get clean water. The canal system that links the drainage systems of Chungi Amar Setu are interlinked, causing a lot of diseases. हमने जितने हेल्थ कैंप लगाए थे, in a number of them we found out that the most common disease is dysentery. वहाँ के लोग ब्रीथिंग इश्यूज और मल्टीपल हेल्थ इश्यूज से गुजरते हैं और वहाँ का सारा जो तबका है वो सोशो इकोनॉमिकली एक पूरर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है. दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी हैज़ टू बियर द बर्nt ऑफ द कमोडिटीज दैट द अदर साइड ऑफ लाहौर यूजेस. आप और मैं जिन कमोडिटीज़ को यूज़ करते हैं उनकी प्रोडक्शन होती है चुंगी अमर सिद्धू वाली साइड पर मौजूद इंडस्ट्रियल एरिया में, और उसका सब वेस्ट और एफ्लुएंट जाता है उनकी कैनाल में, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है. इसके बाद हम आपको मिलेंगे चुंगी अमर सेतु. Not all ecological disasters stem from a faltering nuclear power plant, and not all of them kill 1 million in a month or so. Most of them are silent killers, slow progressive cancers that take over the fabric of ecological society and then bring it to a point of no recovery. One such thing within Lahore, Pakistan, is Chungi Amar Setu. It is fed pollutants by everywhere, and not just the locals who live there, but or dump whatever they have into the sewage lines. But the sewage lines are actually created by the industrial effluents coming from this nearby industry, largely the Qaid-e-Azam industrial estate. And that creates the ecological disaster which the locality has to face. In the last year alone, there were 300 plus deaths recorded in the health units in the vicinity of Chungi Amar Setu due to dysentery. There were over 1,000 deaths due to outbreak of malaria and dengue, and there were over 500 deaths recorded due to cholera. All diseases which were born through that one ecological disaster created by the industrial effluents and by the trading community that dumps all of its waste into the sewage line. And if you look at the sewage line, you can't even see it, because all you see is the pollution. People have to move out. People have to go to the hospitals and the BHUs to get medicine. People have had to shift their whole economic income stream just because of the ecological disaster created by the industry around Chungi Amar Setu. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अमर है। मैं चुंगी अमर सिद्धू ते रहना। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਜੋ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਗੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हुकूमत कहती जी असी रिलीफ देंगे, की रिलीफ दे रहे सानू, यह पैकेज है साढ़े वास्ते। यह मैनू लगता साढ़े वास्ते जायज़ पैकेज है जोड़ा असी सदमा ही लै रहे हैं जिंदगी च। ना कूड़ा इतों चुकन वास्ते आते हैं, ना कोई साढ़े लिए कोई रिलीफ पैदा करते हैं। बोर्ड लैन वास्ते हर बंदा ही साढ़े कोल हुंदा है,
ਇਹ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुनीम है। मेरी यहाँ पे डिस्पेंसरी की शॉप है। ये चुंगी अमर सिद्धू का इलाका है और पिछले 10 सालों से मैं यहाँ पे कूड़ा करकट और आलूदगी देख रहा हूँ, जो एक पोल्यूशन का बाइस बनी हुई है यहाँ के लोगों के लिए। ये कूड़ा इन लोगों को इतना इफेक्ट कर रहा है, इस लिहाज से इफेक्ट कर रहा है कि लोगों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा दस्त की बीमारियाँ लगती हैं, मलेरिया की बीमारी लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी डिस्पेंसरी की शॉप में यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा दस्त की जो मेडिसिन है वही ज़्यादा सेल करता हूँ। और अगर आप देखें तो इस सारे नाले के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो आता है, जबकि इस मटेरियल का कहीं पर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप देखें तो रोही वाली साइड से भी इस नाले को बंद कर दिया गया और जब से मेट्रो का ये ब्रिज बना है इस साइड से भी चुंगी अमर सिद्धू वाली साइड से भी ये नाला बंद हो चुका है। गवर्नमेंट की कोई दिमाग ही नहीं लड़ाती कि ये इतना कूड़ा करकट इसको किसी साइड पे करना है या यहाँ के लोगों को बीमारियों से बचाना है। Living here, the only thing that you hear echoing from everywhere is what Amjad Islam Amjad once wrote. मुझे अपने जीने का हक चाहिए, ज़मीं जिस पे मेरे कदम टिक सकें और तारों भरा कुछ फलक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए, नेमतें जो मेरे रब ने धरती को दी, साफ़ पानी, हवा, बारिशें, चांदनी, ये तो हर इब्ने आदम की जागीर है, ये हमारी तुम्हारी किसी की नहीं। मुझको तालीम, सेहत और उम्मीद की 7 रंगों भरी एक धनक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। ना हवा साफ़ है ना फ़ज़ा साफ़ है, वो जो आबे बका था वो ना साफ़ है। ज़मीं हो समंदर हो या आसमां, एक ज़रा सोचिए अब कि क्या साफ़ है। मौत से पुरख़तर है ये आलूदगी, दोस्तों दिल में थोड़ी कसक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए, मुझे अपने जीने का हक चाहिए।